involves adapting to diverse experiences, developing resilience, and ultimately blossoming into individuals who have weathered the storms of life with grace and wisdom. We are delighted and privileged to welcome Reverend Father Dr. Alvin Pinto, our esteemed principal, Primary Headmistress Reverend Sister Sita, Pre-Primary Headmistress Reverend Sister Mabel, respected coordinators, teachers, and our dear seniors. Today, we gather here to bid farewell to our seniors, remembering their remarkable chapters filled with memories, laughter, and shared accomplishments. Let us take a moment to reflect on the beautiful tapestry of experiences that you have woven together. Beginning from the very first day you stepped into the school to leaving it with lots of memories filled with happiness, melancholy, challenges, fears, and friendship that will last forever. Remember, शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय desire and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are my God. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire and I long to worship you. Yes, I long to worship you. Yes, I long to worship you. St. Joseph's has been the biggest part of my life, as I do believe is the same for many of us. Standing here fills me with emotions and all the moments I have experienced throughout the years. Running through the corridors, having fun during dance practices, making friends, coming to school sometime even on Sunday mornings, and having mentors whom we'll admire our entire life. These classes were not just classes, but sub-parts of the chapter School Life. Starting as tiny tots, crying as entering the campus, singing rhymes, and having lovely teachers. Then, slowly moving on to studies, co-curricular activities, and sports days. To a whole next level within the past 2 years. Having a very supportive class, teachers, and classmates who make sure that every moment is remembered, may it be board decoration, pillar decoration, conduction of assemblies, or even regular classes, will always be the most memorable part of this chapter. I am thankful to our principal for providing us with the medium to gain knowledge efficiently, and also to our teachers for filling us with the knowledge, guidance, and support throughout the years.
There have been our magnificent office and technical staff who have been working behind the curtains, making sure that the memories we make on this stage remains with us as a photograph or a video clip to look back at afterwards. Along with that, our music and dance teachers, making a whole other world of melodies and dance steps to just dwell into and move along the beats. And also our PTIs, who made sure that our stamina and willpower is always high while following those beats, along with the beats of march past, sportsmanship and games. We can also not forget our librarian and our art teachers who made sure that our dreamland is always artistic and colorful and gets all the wild stories to fill its chapters with. A big thanks to our wonderful ministerial staff for being the backbone of this temple and providing us with all the necessities required. A message for my lovely juniors: rather than stressing about your entire life now, I would recommend you all to just relax, put your hand on your heart and say, all is well. Be open to your surroundings and cherish these moments, as after a few years, you will be crying to live these moments again. Bidding goodbye to people I have grown up with makes my heart heavy, but this is what life is. We have to always keep moving on. Thank you. What a delight it is to have you all here for this incredible morning. I can sense the excitement in the air, and I must admit I am just as thrilled as you are for our dance performance. So, let's put our hands together and welcome our dancers to put Punjabi Tadka to this memorable day. ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਜੇ ਬਾਂਚੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਬਾਂਚ ਕਿਦਾ ਕਿਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਿਆਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਚਰਚ ਬੇਬੇ ਬਾਪ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਅੱਖ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਪਵਾਉਣਾ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਪਵਾ ਲਵਾਂ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੋ ਜਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂ ਸੋਚਦੀ ਫਿਟਾਲਦੀ ਮੈਂ ਫੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜਤੀ ਸਵਾ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਉਮਰ ਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੱਦਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੱਦਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਦੂਧਿਆ ਜੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਾਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਹਾਨ ਸੀ ਚਾਂਦਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਬਦਾਮੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲਾਕ ਕਰ ਗਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ ਯਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹਿਬਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ 9:45 ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹਵਾ ਸੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਮਹਿਕਣੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਮਹਿਕਣੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੱਸਾ ਮਿੱਠਾ ਗੁੱਲ ਕੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਲਵਾ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੇਵੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਲਵਾ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੇਵੇ ਲੈ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨੀ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤੰਗ ਹਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਪਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗੋਲੀ ਜਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਧਨ 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 ਗੁੱਸਾ ਜਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਨ ਠਨ ਠਨ ਜਦੋਂ ਸੱਜਦੀ ਸਵਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜੈਸੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਦਨ 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 ਸਜਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਨ ਟਨ ਟਨ ਜਦੋਂ ਸਜਦੀ ਸਵਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆਦਰ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਦਰ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤੰਗ ਹਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਪਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ The journey of life is never ending. However, it marks the end of small, different, and beautiful moments of our lives. A very good morning to all of you present here. Today, I have been honored to express my feelings and thankful gratitude to this institution. On the occasion of farewell of our batch 2023-2024, it is really tough for us to say goodbye to this institution. I would like to give thanks to the teachers who guided us like our parents, to the ministerial staff who were as our helpers to us, to our principal who is a great inspiration for us. For years, I have been a part of the school. Here I have developed very special bonds with different people, and I feel thankful to meet all of them. I have learned a lot of things with tons of experience from this institution in past 14 years. I have learned the importance of friendship, unity, helping and supporting others. I have learned hard work, dedication, punctuality from our teachers. They have always been a great support in our lives. For all these things, I am really grateful and thankful. I am really blessed to have learned things from our teachers and principal who made me an able person within these years. It is hard to accept that after this, we will not see the glowing and crying faces of our friends every morning as we used to do. One of the best friendships which we are going to miss belong to this beautiful school life. I feel harder to leave, but now I can see how the school feels to leave a batch every year. I would like to give thanks to my beloved juniors to conduct
such a beautiful program on this occasion, which is very important for us. I would like to give you an advice to make more and more memories in your school life until you leave this institution. We never remember the grudges and hatred for others. So always remember to spread love and happiness amongst yourself. It is that one day in our lives which we know will come, making us more emotional. But I feel truly blessed to be schooled in St. Joseph's School. Goodbye, everyone. Thank you for your love and kindness. I'll miss you all, and surely we will meet again with happiness in our eyes. होगी 1 to 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी किट पिट तू करदी जिवें क्वीन साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा चंडीगढ़ तो आई नहीं चंडीगढ़ तो आई तेनू देख के होके भरदे ने खड़े चौंका विच तबाही नहीं कोटी ते काला दिल कुड़िए कोटी ते काला दिल कुड़िए जो दागे जन दे टुकड़े दे तेनू काला चश्मा जचदा है कोरे मुखड़े दे तेनू काला चश्मा जचदा है कोरे मुखड़े दे रंग तेरा टाइम जिवें नूंदा मुखड़ा ही कर नहीं सकूंगा टैटू गुट सन दा ते मुंदा तू हॉट तो पहला दिन जूंदा मेरे वाल तुरे ओ स्लोली दिल मेरा बीट करे हौली नजर चुका के जदों बोली तू सुपना ते अख नहीं मैं खोली ओ मेरे नाल नचदी रही ओ बुलियां च हसदी रही सी ओने मेरा नाम पुछया अपना भी दस दी ओ कुड़ी सच किन्नी सोहनी किन्नी जगदी रकान जन जिन्नी जिन्नी जच दी ड्रेस ओदे मिनी मिनी चढ़ी नशे दे वांगू चढ़ी चढ़ी बोतल टकीले दी ओ परी परी भुल ना जाए सी मैनू वरी वरी The time has come when we close our eyes to the old ends and open our hearts to the new beginnings. Good morning to one and all present here, respected fathers, sisters, teachers, juniors, and my precious batchmates. As I stand before you today, I'm filled with the rush of emotions, excitement for the journey ahead, nostalgia for the memories we have shared, and gratitude for the experiences that have shaped us into who we are. Looking back on our time together, we are reminded of the countless moments lived. From the nervous excitement of our first day to the bittersweet realization that our time here is drawing to a close. We have forged bonds
that will withstand the test of time. Perhaps what truly defines our school experience is not merely the lessons found in textbooks, but the invaluable lessons of character, integrity, and resilience that we have learned along the way. To our principal and teachers, we extend our deepest gratitude for your unwavering support, guidance, belief in our potential, offering words of encouragement and wisdom that will resonate with us for years to come. Furthermore, thank you for tolerating our mischievous acts. Talking about it, my classmates have always been in the limelight for that, carrying the legacy of being the naughty and playful 12C. Certainly not something we should be proud of, but gave us some memories we would cherish. Nevertheless, thank you for the joy and moments we shared. Together, we say goodbye to the halls that echoed our laughter and classrooms that witnessed our growth. Though our paths may diverge, the memories we have created together will forever bind us as a community. I would like to express my heartfelt gratitude to my beloved juniors and teachers whose diligent efforts made this occasion momentous. Special thanks to the dedicated ministerial staff who have always worked behind the scenes for the smooth functioning of this institution. And to our school, thank you for being more than just a place of learning, but a home, a sanctuary where dreams are nurtured and futures are hoped. As we stand on the brink of the new beginnings, let us carry forward the spirit of our school to work and serve in love. To the new chapter, may it be the best one written yet. Thank you. Everyone present here today have different aims in their life, but one common thought each one of you ever had must be, कुछ नहीं हुआ तो एक बार UPSC दे दूंगा. With the same thought, here are the students of class 11 depicting the humorous interview of some UPSC aspirants. हेलो एवरीवन, तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने वाले हैं. हम आज यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू लेने वाले हैं. पहले कैंडिडेट को बुलाया जाए. नमस्ते विजेंद्र जी, बिग फैन. हमेशा से चाहता था इंटरव्यू दूंगा तो आप ही को दूंगा. एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है. यही तो सुनना आया था मैं, इसी चीज का तो फैन हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू. क्या आपकी आंखों में इन्फेक्शन है? नहीं तो सर. तो फिर चश्मा क्यों पहना है? उतार दीजिए. ओके सर. तो आपका मेंस में क्या स्कोर था? जी वो तो दिया ही नहीं मैंने. तो आप यहाँ कैसे? सर मुझे लगा यहाँ केबीसी के ऑडिशन चल रहे हैं, फिर पता चला यहाँ तो यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है. मैंने सोचा एक ट्राई मार ही लेते हैं. आई लाइक योर कॉन्फिडेंस मिस्टर बस्सी. तो आप आ गए हैं तो लेट्स कंटिन्यू. अगर आपके दो दोस्त सामने लड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सर जी मैं सिर्फ एक दोस्त को बोलता, भाई मैं नहीं सहता. आई एम शॉक्ड. अरे क्या शॉक्ड, सही तो बोल रहे हैं. बाय द वे, बिग फैन मिस्टर बस्सी. थैंक यू सर जी. तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? ताकि मैं गरीबों को मार के उनके पैसे छीन सकूं, और मुझे डिफेंडर भी तो लेनी है. तो मिस्टर बस्सी आप बताइए कि एजुकेशन सिस्टम की मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो सर टीचर पढ़ाते हैं एक सब्जेक्ट और हमें कहा जाता है कि तुम 12 सब्जेक्ट पढ़ो. ये तो नाइंसाफी है सर. गुड पॉइंट मिस्टर बस्सी, आई अग्री. सतपाल सर आप भी कुछ पूछिए. जी सर, मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है. यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? इतना इजी क्वेश्चन. यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट. वेरी गुड मिस्टर बस्सी, आपको तो केबीसी में ही जाना चाहिए था. ये इंटरव्यू का आखिरी क्वेश्चन है. अगर आप फेल हो गए तो आप क्या करेंगे? मुखर्जी नगर में मोमोज का ठेला लगाऊंगा. सॉरी मिस्टर बस्सी, आप इस इंटरव्यू में फेल होते हैं. सर जी आपको तो पता ही होगा मैं मेरठ से हूँ. हाँ तो बिना कट्टा दिखाए कैसे जाऊँ? आज तो आईएएस बन के जाऊंगा. अरे नो पार्किंग में किसकी गाड़ी खड़ी है? आपकी है क्या भैया? सर जी 2 मिनट रुक जाओ, अभी गाड़ी लगा के आ रहा हूँ. जब तक आप बाकी लोग का इंटरव्यू ले लीजिए. तो फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाया जाए. मैंने सुना है कि अगले कैंडिडेट 2 भाई हैं. मैं कम इन मैडम. यस, क्या
क्या आप ही हैं कैंडिडेट्स? जी मैडम, हम ही हैं। अरे शेर भाई, ये शेरपाल और देवपाल कहाँ रह गए? अरे वो वृंदावन होटल गए हैं खाना खाने। तू बस इंटरव्यू पे ध्यान दे, चिंता मत कर। आप दोनों का नाम क्या है? तुम हमारा नाम न जानते? भाई पहले तुम बताओ। तो आपके कितने मार्क्स आए थे एग्जाम्स में? सर जी हमें ना पड़ती मार्क्स वार्क्स की जरूरत, हम तो कहीं पहुंच जा। समझे सर जी? लगता है इनका भी इंटरव्यू लेना ही पड़ेगा। चलिए बताइए, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? वो खाना खाना पसंद है। और कुछ? ना जी, और कुछ तो ना पसंद हमें। आप लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं? तो तमीज से बात कर लिए मेरे भाई थे। सॉरी, गुस्सा मत कीजिए। अरे कहा सॉरी भाई, देख लो इनको। अरे शांत हो जा चीते। अगर आज इंटरव्यू क्लियर हो गया ना तो चीती और जादू भाई के संग घूमने चलेंगे। बताइए आपको आईएएस क्यों बनना है? मैडम जी हमको ना एक फॉर्चूनर खरीदनी और वहाँ में लगवाने 24 इंच के एलॉय। मामा जी भाग करा देंगे अगर आईएएस बन गया तो। आई एम वेरी सॉरी बट आप इस इंटरव्यू में फेल होते हैं। फेल? काहे को फेल? शेर भाई गुस्सा मत हो, आ जाओ यहाँ से डायरेक्ट हरिद्वार चलते हैं। कैसे फालतू लोग हैं। अब लास्ट कैंडिडेट को बुलाए। ये क्या लिखा है? ये कैंडिडेट वुशेंग क्लैन के मेंबर है। तेरी मैया पे नाचे, हाथ देकर बोल देगा छतरी के मोड़ सा। अबे गौर से क्या सुन रहा? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? अरे परेशान मत होइए, यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे। आप अर्पित जी है ना? यस सर। सो इंटरव्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी वीकनेस क्या है? हम पे तो है ही नो। आपको क्यों लगता है कि आप आईएएस बनने के लायक हैं? सर मैंने खट्टी टॉफी खाई है। कौन सी वाली? बोला तो खट्टी वाली। पानी 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 पानी। अरे बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। पानी पानी पानी। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? पी लिया पानी? मैंने सुना है कि आप बहुत फेमस हैं। झूठ, सरासर झूठ। चलिए कम से कम एक जोक तो सुना दीजिए। एक हाथी को फ्रिज में कैसे डालेंगे? कैसे? दरवाजा खोल के। और कैसे? वाह 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 वाह। सर आप भी एक जोक सुना दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, तो चलिए ये बताइए कि शेर की शादी में कौन नहीं आया? मुझे नहीं पता। हाथी, क्योंकि वो फ्रिज के अंदर है। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये चलिए तो अब ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आए? अरे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? बैगन। इंटरव्यू में तो आप भी फेल होते हैं। चलिए जाते जाते एक शेर सुना दीजिए। जैसे मगरमच्छ के आंसू सच्चे नहीं होते, वैसे 12th वाले का भी बच्चे नहीं होते। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूपीएससी इंटरव्यू के नाम पर लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। अब तुम सब जेल में चक्की पीसोगे। भैया मुझे जेल नहीं जाना। आप जो बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। सर जी इनसे डांस करा लेते हैं, ऑडियंस को भी मजा आएगा और हमारा भी खूब नाम होगा। मस्त आइडिया है, तुम सबको डांस करना होगा। म्यूजिक। म्यूजिक एमसी। दिल विचों तेरे लिए टाइम कढ के करदा मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा। मैनू पता है तू फैन सलमान खान दी, ओदे गाने गा के तेनू मैं सुनाऊंगा। मैडम जी आपका पीछे रह रही हैं, आप भी डांस कीजिए। हाँ जी भैया।
ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा छम छमे पायल घुंघरू बाजने त्यारे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा छम छमा पायल घुंघरू बाजने त्यारे खुटमा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छन हरा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छन हरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। रोको ये सब, मैं 2 मिनट के लिए क्या गया, तुम लोगों ने तो नाच गाना शुरू कर दिया। अब तो मुझे भी डांस करना है। अरे म्यूजिक चलाओ यार। भाई तू डांस क्यों नहीं कर रहा? तेरे हाथ नहीं है क्या? My amore, my amore, my amore, my amore. मोटरों में ढिक चिक टेढ़ी शेड़ी मारे फुर्सतों को धुआं धुआं करके शाम उड़ा दे कर रहे बदमाशियां बोले अंकल आंटियां अपनी ऐसी यारियां दुनिया पे मिट्टी पाए सानू वेले कहंदे अज कहंदे रहंदे इन अ शाइनिंग शाइनिंग फ्यूचर साडा ब्राइट सी सानू वेले कहंदे अज कहंदे रहंदे ओए मित्रा दे संग सब कुछ ऑलराइट सी when I'm talking अपने भी पिंड में एक फुलझड़ी थी वो दिल्ले वाली जुत्ती सूट परा दी गजला लगा के वो मैं क्या जी कहती है पिंड मेरे दिल में भी उठती ही रहती है हीरे मेरी कोठे ते आ मंजी ते बैठा तैनू रज रज वेखो लौंग दा लश्कारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवे चमका दिल साडा दिख गया प्यार ये पटिया ਓ ਯਾਰ ਮੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗਾਲ ਸਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਦਾ ਯਾਰ ਦੇ ਮਖੌਲਣਾ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਂਝ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੌੜਨਾ ਓ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪੀ ਕੇ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਓ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਨੀ ਯਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਨੀ ਯਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀ बेफिक्रे अंगारों में निकले उड़े दिल बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे अंगारों में निकले उड़े दिल बेफिक्रे रात भर झूमेंगे आसमां घूमेंगे चांदियां झूमेंगे तारों के मारेंगे फेरे उड़े दिल बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे अंगारों में उड़े दिल बेफिक्रे काफी गाना दिल से दुनिया का क्या है पता
फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या, थोड़ी मनमानियाँ हो, थोड़ी नादानियाँ हो, शरारतें भी थोड़ी जरा, थोड़ी बेईमानियाँ हो, दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा, बेफिक्रा भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है, बेईमानियाँ हो, दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा, बेफिक्रा भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है, बेफिक्रा भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी, थोड़ी बेईमानियाँ हो, दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा. Hello, hello, and you know, and I feel the world go around me, so let me say hello. बिगड़े ज्यादा सुधरे हुए कम, अब तोड़ेंगे हर कायदा, खामोश नहीं शाम से, कल मिलो काम से, अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए, के घर के सारे रास्ते भूल गए, वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए, घर के रास्ते खुल गए, अब तो हम बिल्कुल गए, आए ऐसी छोड़ में कि जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए. Standing next to you, 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 standing next to you. Goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. They simply mean I'll miss you until we meet again. A very good morning to everyone present here. Reverend Father Dr. Alvin Pinto, Reverend Sister Sita, Reverend Sister Mabel, all the teachers, and my dear friends. Today we have assembled here for a very special event, that is a farewell. I, Gargi Bhati, am extremely thankful to the management for giving me this opportunity to deliver a farewell speech. First of all, I would like to thank you all for gathering here for the celebration of the last day of our school. Most of us joined this school since we were around toddlers, which makes approximately 14 to 15 years spent in this school. In these 15 years, we never thought that we will someday approach a day when we would stand like this and bid goodbye to our beloved teachers, principal, and our juniors. However, we also remember the lessons taught by our dear teachers, who always said that this is just a chapter of your life which gets closed and the new chapter of our life begins. Though we took these lessons casually at the time, but be assured that these lessons have become a part and parcel of our lives and we will never forget them. The teachers at our school are extremely kind, supportive, who have always showed their selfless love, care, and attention to each one of us. We will miss our school the way we used to come early in the morning and chit-chat with our friends. Also, when we used to get late, we were made to stand outside and wait for the teachers to allow us to enter the school. The most awaited periods of the day were the lunch break, zero period, and the games period, when we used to get break from studies to participate in extracurricular activities.
This year, I was also selected as the captain of Greenhouse, and I was extremely happy by getting the chance of captaincy. Being the captain, I was able to understand the importance of teamwork, and I will never forget the fun times I had in the sports week with my juniors. I'll miss my class. We were 18 students in the class, and a teacher used to say that you are the 18 flowers of my class who will blossom in 18 different ways. Now, at last, I would like to give a special thanks to each one of you for guiding me, rather all of us, through the right path and teaching us discipline, humility, good manners, along with studies. I feel confident enough to face the world outside. Thank you. Every day that we had, all the good, all the bad, I'll keep him here inside. All the times that we shared, every place, everywhere, you touched my life. Yeah, one day we'll look back, we'll smile and we laugh, but right now we just cry, 'cause it's so hard to say goodbye. Yesterday's gone, we gotta keep moving on. I'm so
thankful for the moments. So glad I got to know you. The times that we had, I'll keep like a photograph and have you in my heart forever. I'll always remember you. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I'll always remember you. Yeah, yeah. I'll always remember you. दिव्यांश गहलोत विद्या के सागर हैं, सारा कैंपस इन्हें जानता है। अनुभव सैनी, none other than this studious boy. Ansh Dixit, very sincere, humble and polite. अविरल नदियों सा विरल प्रवाह। Alex Edwin, yes, his moves has seen. Next is Krish, good at curricular activities. Tanay Negi, a very sincere, obedient, well-behaved child. Pururaj, Lakshay Jaiswal, Vedanta. Now the next, दिव्यांशी भाटी, दिव्यता है जिनके व्यक्तित्व में, आकांक्षा, an aspirant to achieve high goals in her life. Manjari, smiling like millions stars together in a bow. Chavi Verma, a good orator, a sincere image. Zoya, child, we have seen you here taking up the responsibilities and moving around in the campus. Aditi Sani, a very precious gem of St. Joseph. Dakshita Chaudhary, a good orator. Many a times she has proved her words worthy of speaking. Diana Nagar, a beautiful, charming girl. Lavanya Chauhan, the campus will always miss your melodious voice. Gargi Bhati, brilliant mind like Gargi and Maitri. Clap you all and mark their appearance. The most popular boy, Vidyansh Gehlot, Jadon 12th A. Most popular girl, Dikshita Chaudhary, 12th D. As your names are announced, children, please come on the stage. I request Father to felicitate them, felicitate Divyansh with the bouquet and memento. I also like to request Sister Sita and Sister Mabel to please come on the stage to felicitate the title winners.
Now I request Father to felicitate our popular boy, Divyan, with the memento and flower, and Sister Sita to the popular girl with a memento and a bouquet. Next, we have another title, Valuable Boy and Girl. We have another title, Valuable Boy and Girl. Sister, please stay here. The most valuable boy of the year, Anubhav Saini, 12th A. Most valuable girl going to be Aditi Saini, 12th C. Congratulations. Once again, I would like to request Father to give away the memento and bouquet to our most valuable child, and Sister Mabel to give away the memento and bouquet to our most valuable girl. Thank you, sister. Yet, I request you to be here. We have another title, that's Mr. Josephite and Miss Josephite. And I request Father to open the envelope and reveal the most awaited result. Miss Josephite, any guesses? Gargi Bhati, 12th D. I request Sister Sita to give away sash, bouquet and a trophy to the Miss Josephite 2023-24, Miss Gargi. Father, kindly open the envelope once again. There is a Mr. Josephite all. There is the envelope. It's already. Mr. Josephite, any guesses? Thanai Negi, 12th B. Thank you, Father. Now, I request you to felicitate the winner with the sash, bouquet, and a trophy, Mr. Josephite Tanay 2023-24. Congratulations, winners.
You rock the stage today. Thank you, Father. Thank you, sister. Which symbolically handing over the responsibility. I request our principal to place the candle before the portrait of our patron, St. Joseph, followed by class 11th. They have received the responsibility from the outgoing students. We believe that the class 12 students who are shouldered the responsibility so well are so class 11th and carry forward the responsibility with the values of this institution to its heights. Thank you, students. Thank you so much. If it's ready, everybody is ready. Members of the staff and students of class 12th. At the very outset, I take this opportunity to thank the students of class 11th, the teachers, along with the cultural committee, to putting up such a lovely program of the day. So let's put our hands together and give them a huge round of applause. Thank you, students and teachers. As you prepare to leave our school and embark on the new chapter of your life, I want to say the last words. I do not know how many of you are keen to listen to me, but this precious moment will never come again. Therefore, have the patience for the last time to listen to me for the last time. Students, now on, nobody will tell you the don'ts and do's. You are going to be the master of your life. I know, as you move out to the colleges, you will have more liberal life. But in the school life, you will be always guided by the principal and teachers. But this would never happen in the college life. And we believe you're almost nearing the age of 18. We understand that you are matured enough to know what is best for you. No one will ask you, why are you late, Vishal Nagar? Why don't you wear lab coat, Rohit Rautala? Why are you regular to the school, Dheeraj? Kashish? Why don't you cut your hair properly, Shivam Pal? Why are you not attentive in the class, Karthik Rai? Students, you are going to shape the society. And it depends on each one of you what sort of society you want to shape. Today, life is not easy. It is very tough. And you need to fight to achieve your dream. And if you do not know how to fight, I have a solution.
please watch the film Fighter. Recently it is released. That will give you some idea how to fight your dream. मुश्किलें बहुत है रास्ते पर, मैं जानता हूँ. आसानी से मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर. मुश्किलें बहुत है रास्ते पर, मैं जानता हूँ. आसानी से मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर. सच होते हैं उनके सपने जिनके सपनों में जान होती है. कुछ नहीं होता पंखों से, हौसले बुलंद है तो उड़ान भी हो जाती है. तो बच्चों, अपने हौसलों की आग ऐसी रखनी होगी, अपने हौसलों की आग ऐसी रखनी होगी कि कामयाबी का लोहा भी पिघल जाए. Students, don't harbor ego and pride if you want to be successful. They are the roadblocks come on our way. We have in a very small way contributed or tried to give you the wings to your dreams. Very small way. Principal and all the teachers from nursery till now. It is up to you how far you want to go. How high and higher you want to fly. You have to decide. मुकाम अवश्य मिल जाएगा, सफलता का उजाला निकलेगा. मुकाम अवश्य मिल जाएगा, सफलता का उजाला निकलेगा. थक हार के ना रुकना, मंजिल तक ज़रूर दौड़ना. तो हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट लक एंड ऑल द बेस्ट. अगर मुझे कहीं मिलोगे, अगर कहीं भी मुझे मिलोगे तो ज़रूर बोलना. क्या बोलना? फादर आपको कहीं देखा है. तो हम कहेंगे शायद सेंट जोसेफ में. थैंक यू वंस अगेन. Alex Edwin Daniel. 12th A, Athaf Pratap Singh. Please come forward, students. You are requested to come up on the stage as I announce your names. Aviral Saini, 12th A. Kanu Priya, 12th A. Saloni Thakur, 12th A. Sarthak Singh of 12th A. And from 12th B, we have these students: Jyoti Joshi, Kajal Shukla, Krish, Kunal Nagar, Mimansa Singh, and Pihu Singh. From 12C, we have Shrinika, 12th A. B, Jyoti Joshi, Kajal Shukla, Kajal Shukla, Kunal Nagar, Krish, Mimansa Singh, Pihu Singh, and Roshmita of 12th B. From 12C, we have Riddhi Goel, and from 12th D, there is Lavanya Chauhan.
Thank you, Father, for doing the honors. Congratulations to all these very regular students. Thank you. Good afternoon. I, Kanishka Singh, feel extremely privileged to propose the vote of thanks. First and foremost, I extend my deepest gratitude to the Almighty for His grace that has illuminated our path throughout the planning and execution of this program. I take this opportunity to thank Reverend Father Andrew Correa, manager of our school, for his able mentorship. I would like to extend my heartfelt thanks to our esteemed principal, Reverend Father Dr. Alvin Pinto, for providing us with a platform and support for presenting this wonderful program. My sincere thanks to Reverend Sisters for their support and guidance. I offer my special thanks to our coordinators for their admirable management throughout this event. I feel extreme joy in thanking our dedicated teachers for their tireless efforts. My deepest gratitude to our hardworking office staff for their commendable help. Now, I will take a moment to express my gratitude to the students of Class 11th for efficiently organizing and participating in this incredible farewell. My sincere appreciation to our praiseworthy seniors. Their wisdom, mentorship, and friendship forged during this time will be cherished forever as we navigate the path ahead. Last but not the least, I would like to say a big thank you to the ministerial staff for their valuable help. I thank each and everyone, directly or indirectly, responsible for the successful completion of this mega event. Thank you all.